Good evening, everyone. Good evening, each and everyone who is watching me live. Hi, and welcome to this wonderful platform, Gradeup, on which we interact for your betterment of so that you may maximize your marks. The leading platform for law entrance for e-learning, specifically for law entrance examinations. I hope I am visible to you as well as audible. Can I just switch on the live chats, guys? All right. Hi Janvi, hi Jannat, Aman, Vrinda, Udhav. Good evening, everyone. Hi. Thank you, Taylor Swift. Taylor Swift is saying, "Sir, you are my favorite teacher." Thanks for this compliment. So today we will discuss the 25 important MCQs of legal current affairs from the third week of April. Third week means 16th April से 23rd April तक जितने भी important legal events हुए उन legal events को I have tried to cover by 25 multiple choice questions. So we will discuss these questions. Let's move to the next slide without wasting further time. Yes, guys, but before proceeding, let's talk something about Gradeup. If you are planning for CLAT 2021, then enrollments are still on for Gradeup Booster Crash Course Batch 3 that was recently launched. And if you are perplexed about current affairs and legal events, it is that part of CLAT examination which is boundaryless. So you may enroll for this course. This course is specifically aimed towards optimizing your score in the current affairs and legal events part of CLAT 2021. So you may enroll for it as well. And a crash course, as you all know that the application process for JMI law entrance test had been started. Okay, so a crash course for BHU BLAD and JMI LLB 2021 batch 2 had been recently launched. You may enroll for this course as well on by subscribing to Gradeup Super. I am fine, Rohit. आप कैसे हैं? And CLAT 22 के लिए if you are preparing, if you are in class 11th and aiming the CLAT that would succeed the coming CLAT, that is CLAT 2022, then you may enroll for this course. A comprehensive course batch 4 had been recently launched and enrollments are still on. And if you are in class 10th and planning for CLAT 2023, then a comprehensive course, which is a foundation module, had been launched on Gradeup and enrollments are still on. There is not very much backlog in this course, so you may enroll for it if you are planning for CLAT 2023. As you all know, Gradeup can be subscribed, Gradeup Super can be subscribed in 3 months, 12 months or 24 months. Okay, the subscription can be for 3 months in which you will get a total of 4 months. If you subscribe for 12 months, then you will get 14 months, and if you subscribe for 24 months, 24 months तो अपने आप में ही काफी हैं, that are 2 years. Yes, let's move to question number 1 for the day. Yes, the question number 1 is on our screen. I'm fine, Rohit. आप कैसे हैं? Hi, good evening, Amisha. No, you are not late. We have just moved to question number 1. तो अभी start किया ही है. Question number 1 is on our screen and try to answer it correctly. Let's see how many of you answers it correctly. The Jallianwala Bagh massacre has recently completed 102 years. On which date it completed? 102 years. It's not the question. It's not something that the question is asking. It's something that I asked. The question is asking that the Rowlatt Act, which was also known as the Black Act, जिसको Black Act बोला गया था, वो किस डेट को पास हुआ था? Okay, Hamsa said C, Udhav and Ipshita said A. Any other student who want to answer before I show you the right answer? हाँ, मैं कोविड पॉजिटिव था नहीं, कोविड पॉजिटिव हूँ अभी भी हमेशा. I am COVID positive right now as well. Yes, I am fine. The right answer is A. Yes, the right answer is A. On 10th March 1919, Rowlatt Act was passed. Okay, Rowlatt Act को Black Act क्यों बोलते हैं? Rowlatt Act को Black Act क्यों बोलते हैं? Because Rowlatt Act ने
एनेबल कर दिया था गवर्नमेंट को दैट विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के किसी भी इंसान को जो सिडिशियस एक्टिविटीज में, सिडिशन मींस देशद्रोह, सिडिशन का मतलब होता है देशद्रोह, inciting hatred feelings in the public against the government established by law, सरकार के खिलाफ हेट्रेड फीलिंग्स पैदा करना सिडिशन कहलाता है, सिडिशन को ही हम देशद्रोह कहते हैं। एंड सिडिशियस एक्टिविटीज से एसोसिएटेड जो लोग हैं जिन पर शक है कि वो सिडिशियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको विदाउट एनी ट्रायल इम्प्रिजन किया जा सकता है। ये रोलेट एक्ट कहता था, दैट्स व्हाई रोलेट एक्ट वाज टर्म्ड एज ब्लैक एक्ट। ऑलराइट, एंड 102 ईयर्स जलियांवाला बाग को किस डेट के दिन कंप्लीट हुए? ऑन विच डेट जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड? इट वाज अ ब्लैक डेट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। डज समबडी नो कि जलियांवाला बाग किस डेट को हुआ था? बैसाखी की डेट थी वो। on 13th April, 19 in the very year 1919, 13th April 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। एंड इस डेट को एक्चुअली वो पूरी पब्लिक गैदर हुई थी टू सेलिब्रेट बैसाखी। ऑन दिस डेट बैसाखी का फेस्टिवल था, बैसाखी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए दे गैदर्ड, एंड वहां पर कुछ लोग अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ क्या, हुआ क्यों? क्योंकि वहां पर 13 अप्रैल 1919 को जब बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, वहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल घुसा जिन्होंने नारेबाजी की अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ही वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के अगेंस्ट जब कुछ लोगों ने नारेबाजी की तो वहां पे जनरल डायर आए और उन्होंने फायर का ऑर्डर दे दिया, इन विच हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड। यस यस, सो जलियांवाला बाग मैसेकर को 102 ईयर्स हो गए हैं, और जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था वो सैफुद्दीन किचलू से रिलेटेड था, और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू रोलेट एक्ट के अंडर ही अरेस्ट किए गए थे, एंड रोलेट एक्ट के अगेंस्ट ही वहां पर कुछ लोग इसके अगेंस्ट नारेबाजी कर रहे थे। ओके, सो रिमेंबर दिस नेम एज वेल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल has recently directed the constitution of dash national task force. Yes, General Dyer was the mastermind. वैदिक जनरल डायर ने ही वो हत्याकांड कराया था। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2। जो एनजीटी है, एनजीटी ने डायरेक्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशनल टास्क फोर्स, ओके, दैट वुड टू ओवरसी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑफ 124 नॉन अटेनमेंट सिटीज इन द कंट्री। हाउ मैनी मेंबर्स नेशनल टास्क फोर्स, कितने मेंबर्स की नेशनल टास्क फोर्स है? यस उद्धव, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल दोनों अरेस्ट हुए थे। It's not late. Avishkar is saying it's too late to apply for CLAT or SLAT at the age of 21. It is not late at the age of 21. Most of the aspirants are of the age group of 20, 21 or 22 in CLAT. So it is not late, Avishkar. Okay, everyone is saying B. B means 7 member. Let's see. No, 8 members. NGT ने अभी constitute किया 8 member body. ओके, 8 मेंबर की नेशनल टास्क फोर्स, और इस 8 मेंबर्स की नेशनल टास्क फोर्स को हेड करेंगे एनवायरमेंट सेक्रेटरी। हु इज द एनवायरमेंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? हु इज द एनवायरमेंट सेक्रेटरी? ही वुड बी द चेयरपर्सन, मींस ही वुड हेड दिस नेशनल टास्क फोर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ एनवायरमेंट सेक्रेटरी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स दैट हु इज द एनवायरमेंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? C.K. Mishra. C.K. Mishra. If you do not know, then just इसको आप नोट कर लीजिएगा। So C.K. Mishra, who is Environment Secretary, he would head this National Task Force. All right, and
Yes, CK Mishra is the right answer, Avishkar. You do not need it to delete that. And इस 8 मेंबर्स कमेटी में किस किस मिनिस्ट्री के मेंबर्स होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. तो रिमेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. एंड ये 5 मिनिस्ट्रीज हैं और साथ साथ इसमें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी का नाम सुना होगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. इसके मेंबर्स, इसका भी कोई मेंबर इस नेशनल टास्क फोर्स का मेंबर होगा. ऑल राइट. हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सीपीसीबी? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सीपीसीबी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बताइए कौन है चेयरपर्सन ऑफ सीपीसीबी? समबडी नो? करंट अफेयर्स से अगर आप गो थ्रू कर रहे हैं तो ये तो न्यूज में रहते हैं. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरपर्सन शिवदास मीना. ओके, जस्ट नोट दिस नेम एज वेल. शिवदास मीना is the chairperson of Central Pollution Control Board. Let's move to next question. Question number 3 on your screen. Which has become the first country to introduce climate change law for financial firms in world? वर्ल्ड में ऐसी पहली कौन सी नेशन है जिसने क्लाइमेट चेंज लॉज फाइनेंशियल फर्म्स के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं? मींस दे आल्सो हैव टू फॉलो द क्लाइमेट चेंज गाइडलाइंस. Which nation? It's an important question from international affairs. The right answer is New Zealand. Right answer is New Zealand. न्यूजीलैंड ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है क्लाइमेट चेंज लॉ, जो कि एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल फर्म्स के ऊपर भी. वो सभी फाइनेंशियल फर्म्स जो आई थिंक $100 million, सॉरी $1 billion या उससे ज्यादा का टर्नओवर कमाती हैं, उनके ऊपर एक क्लाइमेट चेंज लॉ एप्लीकेबल होगा इन न्यूजीलैंड. क्वेश्चन नंबर 4 ऑन अ स्क्रीन. विच हेटियन प्राइम मिनिस्टर, ये न्यूज में था अभी. अच्छा, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये जो नेशन है ये कहां पर है. विच हेटियन प्राइम मिनिस्टर हैज रिसेंटली रिजाइंड एज द country faces a spike in killings and kidnappings and prepares for an upcoming constitutional referendum and general election later this year. All right, because उस नेशन में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा था, किलिंग्स एंड किडनैपिंग्स बढ़ रही थी, इस वजह से प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया. और ये जो प्राइम मिनिस्टर थे, हु वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उन्होंने पहले भी रिजाइन करने की कोशिश की थी, बट प्रेसिडेंट ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था. बट दिस टाइम इट हैड बीन एक्सेप्टेड. Yes, Gayatri, that country New Zealand is also best because they have eradicated corona completely. Most of you are saying okay. Janvi said D. Janvi ने काफी बार D बोला है, so she is quite sure about it. Tina and Udak are also saying D. Let's see. Yes, Shiva, Richa, Tina, Janvi. You all are right. Yes, Krutha. The right answer is D. Joseph Joe. He was the prime minister of. He was the Haitian prime minister जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया. और इनकी जगह आप कौन न्यू प्राइम मिनिस्टर बने? फॉर द मीन वाइल द न्यू प्राइम मिनिस्टर इज क्लॉड जोसेफ. अब मुझे बताइए नेशन है कहां पर सिचुएटेड? हैव यू हर्ड अबाउट दिस नेशन? क्या किसी ने इस नेशन का नाम भी सुना है पहले कभी? ये 2015 में ही डेमोक्रेसी इसमें आई थी और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट आई थी. एंड दिस नेशन इज सिचुएटेड वेयर? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Where this nation is situated? It is situated in the islands of Hispaniola. ओके, आपको इतना याद नहीं रखना है कैरिबियन सी में है. कैरिबियन सी मींस आपने वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को कैरिबियन प्लेयर्स भी बोला जाता है. ओके, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को कैरिबियन प्लेयर्स भी बोला जाता है. सो इट इज सिचुएटेड नियर कैरिबियन एरिया ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका. All right, let's move to next question. No problem, Ayush.
Question number 5 on your screen. A Right to Information Act application was recently filed on the total number of volunteers who have applied under the Cyber Crime Volunteers Program of the National Cyber Crime Reporting Portal. Who is the current director of NCRB? National Crime Records Bureau के current director कौन है? He is an IPS officer. बताइए. Who is the chairman? Who is the current director of NCRB? Let's see the right answer. The right answer is Ramphal Pawar. He is an IPS officer, Senior Indian Police Services Officer. Okay. एनसीआरबी क्या करती है? एनसीआरबी एनालाइज करती है डेटा को, क्राइम डेटा को फ्रॉम आईपी, उन सभी एक्ट्स और क्राइम्स का जो कि डिफाइंड है इन इंडियन पीनल कोड और सम स्पेशल लॉज और लोकल लॉस, इन सभी के में जितने भी क्राइम्स होते हैं उन क्राइम्स को एनालाइज करके, डाटा को एनालाइज करके स्टैट्स प्रिपेयर करती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी. इसलिए आप देखेंगे एफआईआर के ऊपर एनसीआरबी का मेंशन जरूर होता है. एंड एनसीआरबी इज इंटीग्रल टू विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो किस मिनिस्ट्री के इंटीग्रल आती है, किस मिनिस्ट्री का पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही पार्ट है एनसीआरबी. दैट्स वाई जब आरटीआई फाइल हुई थी तब इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया था. ओके. the answer of the reply of this RTI was sent by Ministry of Home Affairs क्योंकि NCRB is integral to Ministry of Home Affairs. All right guys, ऐसी मुझे special laws and IPC पढ़ के एक बात याद आई. Theft, it's my question to you. See, theft is a crime under Indian Penal Code. All right, but electricity theft is also punishable under IPC. It's my question. Yes or no? चोरी is crime है आईपीसी में. बिजली की चोरी आईपीसी में पनिशेबल है या नहीं है? नहीं है, बिकॉज दैट इज पनिशेबल अंडर द स्पेशल लॉज, अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. ओके. सो आईपीसी के ऊपर कोई स्पेशल लॉज अप्लाई नहीं होते हैं. अगर किसी पर्टिकुलर ऑफेंस को पनिश करता है कोई स्पेशल लॉ, देन इंडियन पीनल कोड वुड नॉट पनिश इट. दैट्स वाई. तो इस तरह ये आपका प्रिंसिपल फैक्ट में क्वेश्चन आ सकता है. द प्रिंसिपल वुड बी दैट थेफ्ट इज एन ऑफेंस. डिसऑनेस्टली रिमूविंग someone's movable property out of someone's possession is theft, and electricity is also a movable property, but theft of electricity is not a crime under Indian Penal Code because it is a special law for it. Okay, तो इस तरह आपको समझना है. जिस भी क्राइम के लिए स्पेशल लॉ है वो क्राइम आईपीसी में पनिशेबल नहीं होगा. ऑल द इंग्रेडिएंट्स, अगर हम बिजली की चोरी भी देखें, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट देखें, ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 378 ऑफ इंडियन पीनल कोड दैट डिफाइंस थेफ्ट आर फुलफिल्ड. स्टिल इट वुड नॉट बी पनिशेबल अंडर आईपीसी बिकॉज इट हैज अ स्पेशल लॉ. क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 6 बताइए. The union government has recently explained to which high court that making FASTag mandatory for all vehicles does not breach citizens' right to freedom of movement in any way. ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया एक हाई कोर्ट का जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर फास्टैग लगाना, फास्टैग को कंपलसरी भी कर देती है गवर्नमेंट, तो वो भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का वायलेशन नहीं है. Ayush, I am quite fine, not completely well, but quite fine. Tell me the right answer. Vrinda, Haryana do not have, there is no Haryana High Court, that is Chandigarh High Court. Haryana comes under the jurisdiction of Chandigarh High Court. But the right answer for this question is C, Bombay High Court. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर फास्ट टैग को गवर्नमेंट कंपलसरी भी बना देती है तो भी ये लोगों का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर का वायलेशन नहीं होगा, विच इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 of Indian Constitution. Let's move to question number 7. The Supreme Court of India has recently handed over the management of Gokarna Mahabaleshwar temple to an oversight committee headed by which former Supreme Court judge? सुप्रीम कोर्ट ने इस टेम्पल को एक ओवरसाइट कमेटी के इस टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एक ओवरसाइट कमेटी के हाथ में दिया है. ऑल राइट, टेल अस गाइस.
ओके ओके वृंदा गॉट इट, सॉरी। बताइए। जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, यस। टीना यू आर राइट। यस ओम जानवी। काफी मुझे ये काफी डीप क्वेश्चन है, बट अभी भी आई एम हैप्पी टू सी दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। सो ये अपने आप में ही प्राइमा फेसा एविडेंस है कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, यू आर स्टडिंग वेल एंड यू आर स्टडिंग द राइट थिंग्स, because most of the students are answering all the questions correctly, and your questions इतने easy नहीं है, these are tough questions, these are deep questions, but still if you are answering correctly it means कि आप सही track पर जा रहे हैं. So I am quite impressed, seriously I am impressed. Yes guys, yes, Akansha Kruta, C is the right answer. बताइए, इन विच लैंडमार्क जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली ऑर्डर्ड, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया टू फॉर्म अ कमेटी टू स्टडी द फिजिबिलिटी ऑफ अंडरग्राउंडिंग ऑफ ओवरहेड पावर लाइंस टू प्रोटेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड है और वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, तो उसको बचाने के लिए किस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है एक रिसेंटली अभी एक केस में कि जितने भी ओवरहेड पावर लाइंस हैं, जो तार हैं, उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाए सो दैट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कैन बी प्रोटेक्टेड. किस केस में किया है सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली? ये केस न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड था, एंड I hope and I think that you all are habitual of reading newspapers, so you can answer it correctly as well. Anonymous user said C, Shweta also said C. Shall I wait for more answers? चलिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, so no problem. M.K Ranjith Singh and others versus Union of India. M.K Ranjith Singh and others versus Union of India. C नहीं है, श्याम नारायण चौक से तो बहुत फेमस केस था. It is a national anthem केस, national anthem in cinema halls. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है. आप सब लोग सी बोल रहे हैं, सी तो बहुत ही ज्यादा फेमस केस है, ये तो आपको पता होना चाहिए. इट इज रिलेटेड टू नेशनल एंथम इन सिनेमा हॉल्स, so it is not related to to the subject that is asked in question number 8. All right, so the right answer is B. In M.K Ranjith Singh and others versus Union of India, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट ऑफ राजस्थान में, पूरे इंडिया में नहीं, सिर्फ स्टेट ऑफ राजस्थान में एंड गुजरात में, इन दीज टू स्टेट्स जो ओवरहेड पावर लाइंस हैं उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाए सो दैट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कुड बी सेव्ड फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट. All right, so in Rajasthan and Gujarat. Let's move to question number 9. Which High Court has recently sought for details of non-criminal mentally ill persons convicted under trials present in correctional homes while hearing mental health and mental health care and allied matters in states prison? किस हाई कोर्ट ने ये डिटेल मांगी है? किस हाई कोर्ट ने? ये भी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक हाई कोर्ट का जजमेंट था, एंड द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू में देयर वाज मेंशन ऑफ दिस. बताइए. क्वेश्चन नंबर 9. Which high court had asked for this? Okay, Tina said B and Shalu is saying A. चलिए, इसमें मिक्स भी मिल रहा है, तो इट इज क्वाइट डीप क्वेश्चन. आई अंडरस्टैंड कि नहीं पता होगा काफी स्टूडेंट्स को. यस शालू, यू आर राइट. यस ओमी, यू आर ऑल्सो राइट. एनोनिमस यूजर फरा, यू ऑल आर राइट. द राइट आंसर इज सी, कैलकाटा हाई कोर्ट. कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा है कि वेस्ट बंगाल की स्टेटमेंट अंडमान एंड निकोबार में जितने भी करेक्शनल होम्स हैं वहां से उनको सारा ये डेटा डिटेल्स चाहिए नॉन क्रिमिनल मेंटली इल पर्सन्स की. ओके, वाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? बिकॉज यू ऑल, मैंने आप सबको बताया है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आल्सो कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट. कैलकाटा हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में सिर्फ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ही नहीं आता है, एडिशनली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी आते हैं. ओके, दैट्स व्हाई. क्वेश्चन नंबर 10. In a significant judgment, which of the following Consumer Dispute Redressal Commission has ruled that 3D glasses necessary for watching 3D movies in theaters should be made available free of cost? Okay, 3D movies देखने गया है कोई? आपको पता होगा कि अलग से 3D movies में 3D glasses रेंट पर लेने पड़ते हैं या परचेज करने पड़ते हैं. So it should be available free of cost. ये
एक सिग्निफिकेंट जजमेंट में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने कहा है. इन विच जजमेंट? बताइए. लेट्स सी. Yes, Gayatri, Lakshadweep comes under Kerala High Court. And like Puducherry comes under Madras High Court. Goa comes under Goa, Daman and Diu and Nagar Haveli comes under Bombay High Court. Right answer is C. Most of you are correct. Almost all are correct. Amisha, Farah, Tina, you all are correct. The right answer is Kerala State Consumer Dispute Redressal Commission. ये है वो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जिसने ये जजमेंट दिया है. केरला. Question number 11 on your screen. The Supreme Court of India has recently held that ad hoc judges are not an alternative to regular appointments and passed a slew of guidelines regarding the appointment of ad hoc judges in high courts under which constitutional provisions. क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो कहता है कि एड हॉक जजेस कैन बी अपॉइंटेड. बताइए. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Misha and Vedika saying C. Let's wait. The right answer is D. Article 224A of the Indian Constitution. It empowers the Chief Justice of, not Chief Justice of India, Chief Justice of a High Court. It empowers Chief Justice of a High Court to appoint ad hoc judges. And ad hoc judges किनको appoint किया जा सकता है? जो retired judges हैं उसी High Court के retired judges को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप प्लीज एज एड हॉक जज, एक एज एन एडिशनल जज आप हमारे हाई कोर्ट में आ जाएं इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ जजेस और देयर इज ओवर केसेस. ओके. तो आर्टिकल 224A. Yes, Article 224A. समझ में आ गया? Let's move to the next question then. The Supreme Court has held that the power of provisional attachment under GST law must be strictly construed, being a draconian power, and that the same should be exercised only on the basis of tangible material. GST came into effect through implementation of which amendment? ये important question है. बताइए. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि जीएसटी किस अमेंडमेंट से आया. बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? अमेंडमेंट एक्ट पूछा है, अमेंडमेंट बिल नहीं. सो रिमेंबर. बताइए. 101st Amendment Act. Yes, you all are right. The right answer is 101st Amendment Act. 101st Amendment Act से GST आया. All right. And July 2017 में आया था. You might be aware that in July 2017 GST was introduced by 101st Amendment Act. Question number 13 on your screen. Which High Court has recently held that the State Bar Council should act against the bar associations which pass resolution calling upon its member to not defend a particular accused. अभी रिसेंटली ये हुआ था. किस स्टेट में हुआ था आपको क्वेश्चन का राइट आंसर जानने के बाद पता लग जाएगा. तब एक स्टूडेंट ने सीए प्रोटेस्ट के दौरान एक पोस्टर को लेकर वो खड़ा हो गया था कि कश्मीर को फ्री कीजिए, और उसके अगेंस्ट एक रिजोल्यूशन पास कर दिया बार एसोसिएशन ने कि उसका कोई केस नहीं लड़ेगा कोई एडवोकेट. तो किस हाई कोर्ट ने कहा कि ये गलत है? ओके. किस हाई कोर्ट ने कहा गलत है? It was said by Karnataka High Court. Karnataka High Court. Let's move to question number 14. The Supreme Court of India has recently held that a mandamus cannot be issued by the court for setting up an adjudicatory body or tribunal.
अब ट्रिब्यूनल्स वर नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये पता नहीं आपको पता है नहीं, बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये सबको पता होना चाहिए कि ट्रिब्यूनल्स ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी. इट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय विच अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट से ट्रिब्यूनल्स आए. ओके, आप अपना is saying C, Afreen said A, Rohit is saying A, most of you are saying A, first amendment. फर्स्ट अमेंडमेंट से तो लैंड रिफॉर्म्स आए थे. राइट आंसर इज डी, 42nd अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. जो ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट से. ऑल राइट, 42nd अमेंडमेंट से बहुत सारी चीजें आई थी. प्रीएम्बल अमेंड हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज आए थे. ओके, सो द अदर थिंग्स दैट वर एडेड बाय 42nd amendment are article 323A and 323B. It relates to tribunals. 323A relates to administrative tribunal and 323B relates to other types of tribunals. Okay, तो ये दोनों आर्टिकल्स भी आपसे को पूछे जा सकते हैं. That which of the following article relate to tribunals? So that is 323A and 323B. अगर आप स्मार्टली आप ऐसे राइट आंसर कर सकते हैं दैट इफ यू नो दैट ट्राइब्यूनल्स वाज नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर ऑप्शन ए बी सी में सिर्फ नंबर्स हैं एंड डी में अल्फाबेट आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि जिस आर्टिकल के नंबर के बाद अल्फाबेट आ रहा है वही राइट आंसर हो सकता है, बिकॉज इट वॉज नॉट ओरिजिनल पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. Question number 15 on your screen. Which High Court has recently ruled that mere statement that a person was providing political support to some persons which encouraged him to get involved in immoral activities won't come within the scope and ambit of 499, that is defamation. Means defamation नहीं होगा अगर एक इंसान सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है पॉलिटिकल सपोर्ट एक दूसरे इंसान को एंड उसको एनकरेज कर रहा है इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए. मीन्स इफ आई एम abetting someone to defame another person, then it would not be within the scope of defamation. The right answer is B, Tripura High Court. Right answer is Tripura High Court. You all might know that what is defamation. Degradation of someone's fame. जैसे deforestation होता है, degradation of forests, वैसे defamation means degradation of someone's fame in the minds of right thinking society of the people. Question number 16 on your screen. While allowing the interim relief for arranging safe transport and passage of 7 Myanmarese individuals to Imphal and Manipur High Court has recently observed that the principle of non-refoulement है बहुत important है. जब इससे पहले भी रिफ्यूजी मूवमेंट्स हुई हैं तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट क्वेश्चन में आया है. कैन प्राइमा फेसाई बी रेड within the ambit of which article of the Indian Constitution? Which article? Right answer is Article 21. Okay, Article 21 कि जो right of non-refoulement है, there is a right of non-refoulement to all refugees. Right against non-refoulement हम बोल सकते हैं, right against refoulement, sorry. Okay, राइट अगेंस्ट रिफाउलमेंट मीन्स अगर एक रिफ्यूजी को उसके देश से भगा दिया गया और वो हमारे देश में आके सेटल हो गए इंडिया में, देन वी कैन नॉट सेंड हिम बैक टू हिज नेशन. इट इज हिज राइट अगेंस्ट रिफाउलमेंट एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आई होप रिफाउलमेंट क्लियर हुआ आपको. सो नॉन रिफाउलमेंट मीन्स, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट मीन्स दैट अ रिफ्यूजी कैन नॉट बी सेंड बैक टू हिज नेशन. अगर बांग्लादेश से कुछ रिफ्यूजीज जैसे 1971 में लिबरेशन वॉर के टाइम पे इंडिया में आ गए तो उनको वापस उनके देश नहीं भेजा जा सकता है बिना उनकी मर्जी के. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट एंड इट इज एन इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल. क्वेश्चन नंबर 17.
Which High Court has recently held that recovery proceedings instituted under Section 20 of Domestic Violence Act would not operate as a bar on a family court adjudication of the matter? रेस जुडिकाटा से रिलेटेड है जजमेंट. रेस जुडिकाटा आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है दैट व्हाट इज रेस जुडिकाटा एंड व्हाट इज सब जुडिस. मींस अगर ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं देन इट वुड नॉट बी अ बार ऑन फैमिली कोर्ट. Okay, which high court had said it? Kerala High Court. The right answer is Kerala High Court. Let's move to next question. Question number 18. Yes. Who has recently rescued himself as the Amicus Curiae in the suo motu case taken up by Supreme Court on issues related to oxygen supply, drug supply, vaccine policy in wake of COVID-19 pandemic. जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट केस था, इसमें एक बहुत फेमस लॉयर हैं जो एमिकस क्यूरे थे, बट उन्होंने अब अपने आप को इस केस से अलग कर दिया है. He said that he do not want to be an amicus curiae anymore. What is the name of that lawyer? Very important question. Vaidik is saying B. Vaidik is saying B. Poonam is saying A. Let's see. Guys, the right answer is B. Advocate Harish Salve. Advocate Harish Salve was amicus curiae in this suo motu case of the Supreme Court. बट जब हालात इतने खराब हो गए तो उन्होंने और काफी क्रिटिसाइज किए गए सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यू दिया और सुप्रीम कोर्ट ने का जो डिसीजन था उसको काफी क्रिटिसाइज किया गया. सो आफ्टर दैट एडवोकेट हरीश साल्वे पुट हिमसेल्फ असाइड फ्रॉम दिस केस as an amicus curiae. Amicus curiae means friend of the court. You might be knowing. Question number 19 on your screen. Which high court has recently held that wearing mask casually leaving mouth nose exposed to be treated on the same footing as not wearing mask will be liable to same punitive action. मतलब मास्क नहीं पहनेंगे तो भी भाई सजा मिलेगी, और मास्क को अगर कैजुअली पहनेंगे, कैजुअली पहनने का मतलब माउथ या फिर नोज इज नॉट कवर्ड एंड इज एक्सपोज्ड, then it would be equivalent to not wearing a mask and you would be liable to same punishment. Which high court said it? एक हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है एंड दैट इज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 20. The chairman of Rajya Sabha has recently nominated which of the following pairs as members of the Rajya Sabha's Committee on Privileges? Who is the chairman of Rajya Sabha? The Vice President of India, M. Venkaiah Naidu. He is the chairman of Rajya Sabha. And he has recently nominated, अभी chairman of Rajya Sabha ने 2 members को nominate किया है as Rajya Sabha's Committee on Privileges. Members of Rajya Sabha's Committee on Privileges. Who are those 2 members? Tina is saying A. Siddhant is also saying A. Let's see. Most of you are saying A. बीच में किसी ने B भी बोला है. Yes, the right answer is A. अभिषेक मनु सिंघवी को किया है तो सभी को पता होगा. Second name is not Harish Salve. Second name is P. Wilson. P. Wilson and Abhishek Manu Singhui. Both are lawyers. Both are famous lawyers. अभिषेक मनु सिंघवी तो अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, आई थिंक के रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल रहे हैं, आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट ही हैड बीन ऑन अ पोस्ट फॉर द गवर्नमेंट. अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस पार्टी के काफी फेमस केसेस में रिप्रेजेंट भी किया है उनको. क्वेश्चन नंबर 21. In a significant observation, which High Court has recently held that a WhatsApp group administrator cannot be held liable for objectionable content posted by a member of the group in the absence of common intention? Yes, there is common intention which is given in section 34 of Indian Penal Code. Common intention वो होती है जब same intention के साथ कोई crime किया जाता है. But किस हाई कोर्ट ने कहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर लायबल नहीं होगा किसी भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के लिए जो उस ग्रुप में पोस्ट हुआ है, इफ द एडमिन ऑफ दैट ग्रुप डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन. इट हैड बीन सेड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट. यस, बॉम्बे हाई कोर्ट. मोस्ट ऑफ यू वर करेक्ट. द राइट आंसर इज बॉम्बे हाई कोर्ट.
22. The Madras High Court has come down heavily on the Election Commission of India for allowing political rallies during the COVID-19 pandemic and said officers should probably be booked for murder. Who has recently been appointed as Chief Election Commissioner? अभी Chief Election Commissioner का recently appointment हुआ है. Election Commission is a constitutional body, ये भी आपको याद रखना है. It is a constitutional body, not a statutory body. Election Commission को Constitution of India ही बनाता है. And who is the new Election Commissioner of India? Siddhant is saying D. Tina also said D. Omi also said D. Ayush is also saying D. Vinda is saying D. Let's see. Yes, D is the right answer. Sushil Chandra. Sushil Chandra is the new Chief Election Commissioner. The Centre has appointed whom as the acting Chief Justice of Calcutta High Court? Acting Chief Justice of Calcutta High Court from 29 April onwards. कौन है? 29 April onwards means इनको retrospective effect के साथ acting Chief Justice बनाया गया है. Right answer is Justice Rajesh Bindal. Justice Rajesh Bindal had been appointed as new Chief Justice, acting Chief Justice of Calcutta High Court. Second last question for today. Which High Court has recently passed significant directions to ensure that no prisoner should be denied vaccination merely for not having identity documents for registration on COWIN? किसी भी प्रिजनर को इस बेसिस पे डिनाई नहीं किया जा सकता कि उसके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स नहीं है. It had been said by Odisha High Court. Odisha High Court. And the last question for today. The Kerala High Court has recently held that criminal proceedings involving non-compoundable offence can be quashed at post-conviction stage, invoking power under dash upon settlement between victim and convict. Non-compoundable offences होते हैं जो थोड़े less heinous होते हैं. Okay, there are two types of offences. One is compoundable. Compoundable are heinous offences. Another is non-compoundable. Simply आप समझें कि in compoundable offences, compoundable are less heinous offences. Compoundable offences are those in which compromise is allowed within the court, and in non-compoundable offences compromise is not allowed. So Kerala High Court ने recently कहा है कि criminal proceedings involving non-compoundable offence can be quashed at post-conviction stage, invoking power under which act, which section of IPC or CRPC? Most of you are saying A. Let's see. Yes, is the right answer. Section 482 of CRPC, which gives power to the High Court to quash an FIR as well. Okay, so it is a power to the High Court under Section 482 of CRPC. Compoundable offences वो होते हैं जिसमें compromise किया जा सकता है. Simply, like defamation is a compoundable offence. And हमेशा याद रखिएगा criminal cases कैसे होते हैं? State versus accused के नेम पे होते हैं. State versus X, state versus Y, state versus Z. These are the criminal cases. But compoundable criminal cases, a private individual versus A versus B. इसमें state का role नहीं होता है. State is not the prosecutor in compoundable offences. Like defamation. Defamation is a compoundable offence. In defamation, if A had been defamed and A is the victim, then the case would be filed by A versus B. Case A versus B होगा, state versus B नहीं. In compoundable offences. In non-compoundable offences, the state would prosecute the wrongdoer. Okay. तो compoundable, non-compoundable, cognizable, non-cognizable, bailable, non-bailable, इन सब का एक आपको brief होना जरूरी है. Okay guys, these were the 25 questions that I needed to discuss. If you like this session, then please hit the like button. Comment कर सकते हैं कोई भी doubt हो तो. You may share this session and subscribe to this wonderful channel. Also, press the bell icon. The WhatsApp number of Gradeup on which you may raise your query and the calling numbers of Gradeup. सही prep है तो live set है. Good night guys and take care. Bye bye. Good night.